जिसके साथ तुम अगर बैठे हो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वो सही पार्टनर है। मतलब तुम्हारी रिलेशनशिप एक्टिविटी लेड नहीं है, तुमको उसके साथ सिर्फ बैठना भी अच्छा लगता है। नहीं कर रहे हम बात, हम दोनों सोच रहे हैं अपनी दुनिया में ही है। कैन यू डू नथिंग विथ योर पार्टनर? दैट इज अ गुड डेफिनेशन टू डिसाइड वेदर देयर पार्टनर इज राइट और नॉट। Welcome to Humans of Bombay, Raj, and this is funny because we are friends. So Yeah. doing this on a podcast is good also because when I was reading the questions, I was like, "ये तो पता है," but good. That's good. मुझे बहुत अजीब लग रहा है because I felt like you're saying, "Oh, welcome to Humans of Bombay." I was like, I was already here. Like you already welcomed me. It has been time, and I know you so well. So ठीक है. So I'm going to start with a question that I personally related to and other people didn't relate to. Okay. Okay. Wow. So last year you said if there were 25 hours in a day, I'd still work for 26 hours. Yeah. And there was a lot of backlash. बहुत ही backlash था. And I was like, I relate to that because for me, work is play. Yep. I can keep going. Yeah. Recently, I posted on my story ki, you know, sometimes I have to force myself into work-life balance just because और लोग कहते हैं कि work-life balance होना चाहिए. Yeah. But for me, I'm the happiest while I'm meditating. So Yep. if I'm meditating 6 in the morning or 3 in the night, it doesn't matter. True. So what is your take on that today? I would still not change that. Yeah. Like and I would say that, okay, let me give you more perspective. तो हुआ कैसा था? I was in flight. I was coming from LA to India. It was like a long 16-20 hour flight. And usually what happens कि जब भी मैं फ्लाइट में रहता हूँ, मैंने एक बार शाहरुख खान का सुन लिया था कि फ्लाइट में ना रेस्ट मत करो, सो मत, काम करते रहो बिकॉज तुमको आदत हो जाएगी सोने करने की. सो आई वाज लाइक ओके. तब से आई डोंट रेस्ट इन फ्लाइट. आई ऑलवेज जस्ट सिट डाउन एंड कीप राइटिंग और कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ. एंड उस टाइम पे जस्ट आई सॉ फ्रेश मूवी कॉल्ड डिफाइंड वंस. इट्स अ स्टोरी ऑफ डॉक्टर ड्रे and Dr. Dre, how he sold a $3 billion company called Beats to Apple. And उसके इसमें बता कि work is play, this is that. तो ऐसा काफ़ी शाहरुख खान was in my head, Dr. Dre was in my head, और मैं 16 hour 17 hour फ्लाइट में बैठ के कुछ ना कुछ लिखते ही जा रहा हूँ. I just got out of flight, मैं निकाला फ़ोन, I was like, किस पे? ट्विटर पे डाला? ट्विटर पे just open किया, ट्वीट किया कि ऐसा यार I love my work too. ये सिर्फ शाहरुख खान या सिर्फ डॉक्टर ड्रे को अकेले को नहीं है, मेरे को भी पसंद आता है बहुत वर्क. So if there are more hours, I would still work for like that much time and even more than that. So if there are 24, instead of 24, if there are 25 hours in a day, I would still work for 26 hours because I just love it. Right? And it blew up. It blew up. So this was my mindset कि मैं निकला, मुझे बहुत पसंद है करना है. And I feel giving a context to that is कि I think you, me, and couple of us, we've gotten too lucky. That we have been able to find something that we love and that is helping us get the bread. Right? That is just extremely good position to be in your life. Yeah. Right? And I really worked hard to be here. Now I enjoy it. It would have been when I was 16, when I was 17, when I started working. उस time पे कोई बोलता अरे यार मुझे जाना है, मुझे दोस्तों से पार्टी करना है, दिन भर मैं सोचता रहता था मैं क्यों काम कर रहा हूँ, right? And today I can say that and I feel it good because अब वो change हो गई. I worked hard for this position to come here and to actually be able to make money by doing what I love. तो इसलिए मैंने लिख दिया था. But I empathize with a lot of people who shat on me, right? Who were like against me and selling that I'm promoting toxic work culture, this and that. Genuinely, I was not trying to promote anything toxic. Yeah. I was coming from one side. तो कॉन्टेक्स्ट कोलैप्स था उसमें. मैं सिर्फ मेरी साइड से आ रहा था, लोगों ने सोचा कि मैं उनको बोल रहा हूँ, राइट? तो दैट इज वाज द प्रॉब्लम. एंड आई काइंड ऑफ रिलेट विद अ लॉट ऑफ पीपल कि दे आर स्टिल गोइंग थ्रू फेज वेयर दे डोंट एंजॉय वर्किंग, दे आर इन अ बैड जॉब or maybe in the bad situation or maybe with bad boss or just not happy with what they're doing. So I empathize with a lot of people and I was wrong. मेरे को और कॉन्टेक्स्ट देना चाहिए था. पर अगर if you personally ask me that is your take still the same? Yes, it is. Yeah. In fact, you make it 26 ka 30 or 35. I'm okay with doing that. And did you start ये जो hustle culture or just the hustle attitude that you have, did it come because your family very early on faced an adversity and you saw that ki, you know, there's something going on in the family that's not conducive? So did it come from there, which is after which you also started working? So was that जो, you know, they कहते हैं कि the experiences in our childhood
shapes who Shapes we who you are. are as an adult. Is that the reason? What do you call hustle culture is the question first. Yeah. इस पे debate नहीं करते. No, I'm just telling, okay? Like, what do you call hustle culture, right? For some people, hustle culture can be, I don't like doing it, but I have to do it because I have to take care of my family. So I have to keep grinding because एक race चल रही है और उसमें अगर नहीं भागे तो हम पीछे रह जाएंगे. That can be hustle culture. For some people, hustle culture is a way of life. They don't know anything else. Correct. Because all they've seen since they were kids, I've seen my father really grinding it out, right? He's been working really hard. He comes from a very average background and he has to work his way up from being on the streets to becoming and owning a multi-million-dollar business, which he has today, right? So I saw him. So morning to night, मेरे लिए कोई और way ही नहीं था. Like for me, our family life was this. And it was not that my dad was unavailable for my mom or for the family or for anything. It was just कि my mom was also actively participating in the conversations of, okay, अच्छा business के लिए अगली चीज़ क्या करनी है. So to me, that was a way of life. I don't treat that as a hustle culture. मैंने बचपन से देखा ही सिर्फ ये है. तो क्योंकि मैंने आसपास से ये देखा कि पापा ये बोलते हैं कि अगर बेटा कुछ भी लाइफ में करना है, लाइफ में आगे बढ़ना है, तो इतनी मेहनत से करना है कि तुम नंबर 1 हो उस चीज़ में. तुम नंबर 2, नंबर 3 नहीं हो सकते. तुम कुछ भी करो, नंबर 1 करो, क्योंकि नंबर 2, नंबर 3 की वैल्यू नहीं होती. That was my dad's perspective at that time when he was doing things. Right? Like, कुछ भी करो, बस करो. Right? और बहुत मेहनत करो. तो मैंने वो देखा और ये से बोलते नहीं थे, वो करते भी थे. And because he was doing this, I was like, okay, when I start doing my business, I have to do the same thing. Because I didn't know any other way. And then when I was 16, I was super underconfident kid. Like ultra underconfident. क्योंकि 16 तक ना मुझे ढंग से इंग्लिश बोलना नहीं आती थी. ठीक है? मुझे I was not born in like a very fancy family. ठीक है? तो जब भी मेरे सारे friends आते थे cars में, expensive cars and all that shit, I was like, oh damn, I want that. Right? So I would always think about, I need to go to a better school. Because I wanted to play tennis, पर मेरे पूरे स्कूल में नहीं था और दूसरी बाहर अगर क्लब्स में जाना होता था तो 10-12 लाख की मेंबरशिप लेनी पड़ती थी. Right? तो I was like, मैं स्पोर्ट्स नहीं खेल सकता जो मुझे चाहिए, मैं अच्छे स्कूल में नहीं जा सकता, मेरे पास अच्छी गाड़ियाँ नहीं है. So I need to really work and have a crazy life. I'm going to stop you here. ये जो attitude आपने अभी you just repeated is very important, right? क्योंकि it's not a मेरे पास नहीं है, I'm so sad, मैं क्या करूँ? It's a मुझे काम करना है, मुझे उस तक पहुँचना है. Yeah. So is that the reason? Was that the motivator? कि okay, I'm not just कि I've seen it in my family, my father's hustling, but ये जो चीज़ें हैं, ये जो upscale lifestyle or whatever it is, मुझे वो भी चाहिए. It's a parallel journey. Yeah, the reason to get better or like wanting better things or needing better things or whatever you can say, it also comes from family and surroundings. I saw that my family was working for better things. तो अगर अच्छी चीज़ चाहिए तो काम करना पड़ेगा. और अच्छी चीज चाहिए ये तो पूरी फैमिली वर्क कर रही है. Like this is not a question that do you want a better life or no. It was not that our family, like my whole family even today, we're super happy with what we have, but we're not content. Like I love this, and this is a lot of people will take this as a wrong thing, but I think this is the best thing. I think the most powerful thing which my family gave me is power of being discontent. Yeah. Almost all the times. So my family was never settling. हमेशा अच्छा और better क्या हो सकता है, और better क्या हो सकता है. ये तो अच्छा है, लेकिन आगे अब क्या कर सकते हैं, right? And it was never about, let's say it was never about कि oh we want a better car, or like my dad or mom would not talk about this. My dad's like, okay, I have this much money, I can live the same life for next 5 years. How can I make it 10 years? Correct. How can I make it 15 years? How can I make it 30 years? So that my mom can have a dream house, my kids can have the dream cars. My legacy कहते हैं. Legacy, right? So my father would always think about that. My mom would always be like, okay, आज मेरा घर ऐसा है, अब मैं घर और better कैसे करूँ? Because she's a homemaker, right? I am eating this or making this for my kids. How can I get better? How can I be better? How can I go to better things and learn better things for my kids so that they have the best things? So पूरी फैमिली डिसकंटेंट थी. As a unit, सारे मेरा छोटा भाई, he would always just push. He was an athlete before, so he would wake up at 4 a.m. and try to run every day. He was younger than me. ऐसा क्या कर रहा है ये? He had a Nigerian coach in his school, and he would come and train him for football. और
धूप हो रही है, बारिश हो रही है, ठंड हो रही है, वो मेरा भाई बाहर जाके फुटबॉल रोज मार रहा है. I was like, भाई ये क्या सीन चल रहा है, पूरी फैमिली मैं क्या कर रहा हूँ? मैं क्या कर रहा हूँ, right? So somebody is trying to achieve excellence in fitness, someone is trying to achieve excellence in terms of family and house, one is trying to achieve excellence in terms of business and social life. So I was like, this is not an option, this is how we know how to live. मुझे करना ही है. मैं पता ही नहीं था कि इसके अलावा कोई और तरीका भी होता है. Correct. So that is how it came. So it was just like, look at other people, what they are doing better, learn that and make that your life. Yeah. And that is how it started. So that is why I became discontent. I started hustling because this all came from my family. Yeah. And when you started your business at 16, Yeah. very young, and you said you were shy. Yeah. Which अगर आप आज राज शमानी को देखोगे तो नहीं. shy तो बिल्कुल नहीं आएगा. As a synonym, Yeah. You said that English was a weak point. You've said this across. Yeah. When you were even giving talks, all of that, you always mentioned कि ये मेरी weak point थी. Again, that you can't say today. तो ये journey कैसी थी? What did that first business teach you, and how did you flip as a personality? क्योंकि they're two different people now. Yeah. I would still say कि दोनों है तो सेम ही. इसलिए सब आज एक इंग्लिश बोलने लग गया है और एक पहले नहीं बोलता था. बाकी दोनों सेम है. And I was not shy. Okay, I was shameless from day one. It's just I was underconfident. I was not confident about myself. I would talk about random stories and fake about myself and about fake stories from day one. मतलब मैं पहले pretend करता था, अब मैं ठीक है confident हो गया हूँ खुद को लेके, right? But shy तो नहीं था, right? And why I keep saying this कि I was not good at English or this and that, you know, when you come from a family या तुम जब ऐसी जगह से आते हो ना जहाँ पे तुम अच्छे हो पर तुम बेस्ट नहीं हो, तुम्हारे आसपास बहुत सारे लोग हैं जो तुमसे बहुत आगे हैं, राइट? तो उस टाइम पे हर छोटी चीज़ ना पिंच होती है कि तुम इंग्लिश बात नहीं कर सकते, तो यू कांट टॉक टू लाइक द, उस टाइम पे द मेजर मोटिवेटर वुड बी ओके द टॉप गर्ल्स और द लाइक द बेस्ट गर्ल्स आउट देयर, लाइक यू कांट टॉक टू देम बिकॉज दे टॉक. आई वाज लाइक you can sit with us, bro. Right, I'm just telling you, right? And a lot of small town boys will relate to me. Because like when you come from a tier 2, tier 3 city, यही होता है सीन यार कि उसमें क्लस्टर होता है. एक क्लस्टर होता है elite लोगों का और एक क्लस्टर होता है हम लोगों का. हम लोग ना बस ये देखते रहते हैं दिन भर कि यार यहाँ कैसे एंटर करें. तो सब लोग अलग अलग चीज़ से अचीव करने की कोशिश करते हैं. कोई बोलता है मैं ऐसी बॉडी बनाऊंगा, देख सब मेरे को देखेंगे, राइट? कोई बोलता है कि मैं ऐसी गाड़ी खरीद लूँगा ना, देखो फिर तक मेरी गाड़ी हुई सब देखेंगे. कोई बोलता है कि यार मैं पर्सनालिटी में इंग्लिश बोलने लगूंगा, मैं फेमस हो जाऊंगा, मैं ये हो जाऊंगा, राइट? लाइक सो हर कोई अलग अलग तरीके से उस इनसिक्योरिटी को या उस क्लास में एंटर करने के लिए कुछ ना कुछ बैटल कर रहा है. एंड दैट्स हाउ वी ट्राई टू डू इट एवरीबडी. एंड अब रियलाइज नाउ कि ये सिर्फ टियर 2 टियर 3 की कहानी नहीं है, ये अक्रॉस हर इंसान की कहानी है. हर कोई अपने से ऊपर किसी को देख रहा है और बोल रहा है कि यार ये सर्कल क्रैक ये चाहिए, ये सर्कल क्रैक करना है, ऐसे करना है. यू गो टू you're earning an average income, you want to be with millionaires. You're with millionaires, you want to be with multimillionaires. You're with multimillionaires, you want to be billionaires. You're a billionaire, now you want to be change makers and political leaders in the like top world. And you want to like buy islands and save. Yeah, like मतलब कुछ ना कुछ तुमको करना ही पड़ेगा. Like it's always just up or circle or circle or circle. So that was the story. ठीक है. अब what all of this taught me the journey of business. Okay, like my last 10 years now, I'm 26, 10 years of my business journey of trying a couple of things and stuff, right? दो चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है. एक कि जो ये बोलते हैं ना कि next scope is let's say AI और next scope is content creation और next scope is biohacking or whatever, तो ये कर लो, वो कर लो, ये skills है, सब बकवास है, right? कोई भी चीज़ पकड़ लो, उसमें तुम अगर टॉप हो गए ना तो तुम वैसे ही फोड़ दोगे. Doesn't matter what. Like you can and people can argue कि अच्छा जो पुरानी टेक्नोलॉजी होती है उसमें नहीं चलोगे. नहीं, तुम अगर फूजी फिल्म हो और तुम अगर आज भी पोलरॉइड बना दो तुम आज भी चलोगे, राइट? इट्स जस्ट यू हैव टू मास्टर समथिंग. You want to clean floors, clean it in a way that nobody can beat you. तो वो कर लो या तुम AI के एकदम टॉप साइंटिस्ट बन जाओ तो तुम सब में फोड़ दोगे. That is one learning I've had. No matter what you do it in a way that you're number one. That was the biggest learning I had. Okay, that is one. Second, business learning is more of a human learning
because you actually end up dealing with humans in business, is तुम अकेले नहीं हो जो insecure है, दुनिया में हर कोई insecure है. तो तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं कि यार वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरे बारे में क्या सोचेगी. You don't have to go there and be like, yo, यार मैं बात कैसे करूँ उससे, मैं इसको रीच आउट कैसे करूँ. तुम हर टाइम यही सोच रहे होते हो, राइट, कि मैं इस नेटवर्क में कैसे एंटर करूँ. तो कुछ नहीं है, सब दिन भर बस यही सोच रहे हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोच रहा है. राइट. तो इफ यू कैन गेट ओवर दैट वन फीलिंग दैट सब इनसिक्योर हैं, तो मैं जाके सामने वाले को उसकी इनसिक्योरिटी कम कैसे करूं, तुम ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स बन जाओगे, नेटवर्क बना लोगे. that is absolutely true. It's a good advice, good piece of advice. But I tell you, the best advice this is my own advice, okay, and this is genuinely अच्छा, तो best बना लिया, खुद का. मेरे best advice which I can give to anyone: find how you can play name, place, activity thing with people. Okay, give me an example. I'll elaborate. Okay, I want to talk to somebody at a bar or at a conference or at a normal place, right? First thing I have to remember, people like people who are like them, or people like people who like them. That's it. Yeah. That's it, right? तो अब तुम्हें ये फिगर करना है कि या तो तुम उसके पास चले जाओ, उसको ये बताओ कि तुम पसंद करते हो उसे, या तो तुम्हें करना है कि तुम दोनों सेम हो, राइट. दोनों में से एक चीज तुम्हें फिगर आउट करनी है. So how will I figure out that we both are same? I'll come to you and I'll start playing name, place, activity thing. So I'll start with your name. What's your name, right? ठीक है. Same name ही हो गया तो बहुत ही बढ़िया हो गया. फिर तो तुम wild match कर जाओगे, right? मेरे साथ बहुत होता है. I have the same. My name is the most generic name ever. So you vibe instantly. Oh, your name was okay. Then you can build on a conversation, right? Because that just becomes one reason to start the conversation. मान लो name 90% chances नहीं match करने वाला, right? Then where do you come from? Let's say you said Bombay. I said, oh, I'm from Indore. And then place भी match नहीं हुई. But I can tell you, oh, मैं Bombay अभी आया हूँ. Which part? अच्छा, वर्ली. अरे मैं पहले वर्ली में रहता था यार, लोधा. अरे you have a sister there, shit. Right? We can just keep building the conversation. तो place पे match कर गए. तो now we have a rapport to talk to her. मान लो place पे भी match नहीं करा. मैं इंदौर से आया हूँ, तुम बॉम्बे से हो, हम दोनों match ही नहीं करे. Now activity, right? Okay, so you're at a club and it's like, okay, you love partying or what do you do? Like usually like, oh no, I don't like partying. So okay, do you like going to gym or do you like to go to yoga or like what do you do? Like what activities do you like? Randomly ask that. तुमने बोला कि मुझे योगा पसंद है. यार मैंने अभी योगा स्टार्ट किया, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, राइट? एंड देन यू स्टार्ट. नहीं बिगिनिंग में तो स्टार्ट होता है, डिफिकल्ट होता है, पर आई कैन जस्ट कीप आस्किंग. फिर एक्टिविटी पे भी मैच नहीं करे. मान लो कि नहीं, तुम्हें पसंद है योगा और मुझे पसंद है एडवेंचर स्पोर्ट्स, और हम दोनों नहीं मैच कर रहे बिल्कुल भी, और बिल्कुल इंटरेस्टिंग. थिंग के बारे में बात कर लो. थिंग्स आर आई कैन कॉम्प्लीमेंट ऑन यू. ओह, आई लव the shoes you're wearing. That's the thing. I love your earrings. And then I can talk, hey, you know what? I love your earrings, but I keep wondering यार, every time I have to gift it to my girlfriend or my mom, देते कैसे, तुम लोग choose कैसे करते हो, तुम पे select क्या होता है? And then you keep advising, and then you build a conversation. Right? So one of the four they have to match. कुछ तो match हो ही जाएगा. तो तुम्हें बस ये नया connection बनाने के लिए तुम्हें बस ये सोचना है कि मैं सामने वाले के साथ name, place, activity thing कैसे खेलूं. It's a good game. Yeah, that's all you have to do. Because the other person has 50% chance of liking you and not liking you. First, तो 50% chances of not liking you पहले 2 मिनट में पता चल जाएगा, तो वापस आ जाना, दूसरे से बात करना. 1000, 10,000, 50,000 लोग हैं दुनिया में, 25,000 लोग नहीं पसंद करेंगे, 25,000 पसंद करेंगे, तो वो 25,000 ढूंढो. हाँ, तो वो 25,000 ढूंढो जो तुम्हें पसंद करेंगे यार, छोड़ दो. So that's how life is. That's the biggest business lesson. Wow. And good life lesson also. Business, life, sub. Everything. Business is about people. Life is about people. You have to connect with more people in order to get ahead in your life. How do you connect? By playing name, place, activity. Simple. Life is very simple. Very simple. forward activity. But after you started your business, फिर आप talks देने लगे, and that was a whole different journey. Oh yes. Which led to eventually content creation. So it's a मतलब wallet up and down, like not same industry, not very stereotypical, क्योंकि content creation तो अभी हुआ. When I started, I remember मुझे भी लोग पूछते कि क्या है Facebook पे stupid page whatever. आपके family का reaction क्या था? Especially when you made the pivot or parallelly from business to content creation, कि
क्या कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो ऑनलाइन, so what was that process like? So public speaking ना, this is how it happened and then I'll come to content creation. ठीक है, मैंने नई नई चीज़ सीखी थी about myself कि मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, लोगों को पसंद आती है. मैं कॉलेज में एक प्रेजेंटेशन दिया था मार्क्स के लिए क्योंकि ज़रूरी था, एंड मैं इतना डरा हुआ था, मैं 30 दिन प्रिपेयर किया उसके लिए. 30 days आई प्रिपेयर्ड फॉर इट. ठीक है, और फिर 30 day प्रिपरेशन के बाद 4 minute का था. 30 days for 4 minutes. I did it and I did it in a way as if I know it. Like, right, everybody give me a standing ovation. I was like, damn, पसंद आ गया, अब तो हम यही करेंगे. And then तो उसके बाद I just started liking it and then I applied to UN. तो यूनाइटेड नेशंस में मैंने अप्लाई किया. 7 राउंड्स होते हैं एप्लीकेशन के. मैं 7 के 7 में सिलेक्ट हो गया. आई डोंट नो हाउ, बट विद आई थिंक द हैक विच आई यूज एट दैट टाइम वाज गूगल. तो जो क्वेश्चन मुझसे यूनाइटेड नेशन पूछता था, ये क्वेश्चन फॉर्म तुमको लिख के उसमें 140 वर्ड्स, कोई 2000 वर्ड का ऐसे 10-25 चीज़ें तुम्हें लिखनी होती थी. आई वुड गो टू गूगल, रीड अबाउट व्हाट 10 people हैव डन, थोड़ा सबसे निकाला, उसमें मेरी लाइफ डाल दी और मैं कॉपी पेस्ट कर देता था. राइट, सो ऐसे करके मैंने पूरा फॉर्म भर दिया. और क्योंकि वो दुनिया के 10-12 टॉप लोगों के था, तो चांसेस मेरे हाई थे सिलेक्ट होने के. मैं हो गया. आई वेंट टू यूनाइटेड नेशंस. अब मैं यूएन में एंटर कर रहा हूँ. ओके, यूएन वियना, व्हेन यू गो टू वियना हेडक्वार्टर्स यूनाइटेड नेशंस, एक तो सबसे प्राउड वाली फीलिंग आती है तुम्हें, जहाँ पे तुम्हारा पूरा पर्सपेक्टिव चेंज होता है. तुम्हें लगता है लाइफ में तुम्हें यही करना है. क्यों? क्योंकि तुम्हें ना वहाँ राज नाम से नहीं बुलाते, तुम्हें बोलते हैं इंडिया. Wow. Right, because you're the only one from the country who's representing. So there are 192 people from 192 different nations. You're India. Pure time I was like, I have made it in my life. Yeah. Right? And I was 17. I was 17. Yeah. Okay. I was 17. And I was 17. I was like, wow, I made it. And then they give you a badge. ऐसे UN का तो badge देते हैं. उसमें वो enter जब तुम करते हो तो ऐसे green light आती है, legit हुआ तो अंदर. अब तुम्हें फीलिंग आ रही है तुम AI वर्ल्ड में आ गए हो. लेजर लाइट्स आ रही है, ये ऋतिक रोशन वाला मोमेंट है, दैट आईज आर कमिंग आउट. हैव यू सीन दैट क्रिश वेयर द कंप्यूटर कम्स इन लाइज आईज देखता है, एंड यूएन में ये हो रहा. आई वाज लाइक वाओ, यही करना है लाइफ में. राइट, फिर एंटर किया. अब वहाँ जाके तुम्हारा सिर्फ ये काम होता था, तुम्हें 25-30 रिपोर्ट्स पढ़ के सिर्फ एक स्पीच देनी होती थी अबाउट योर टॉपिक. सो माई टॉपिक वाज एंटरप्रेन्योरशिप, हाउ इट कैन लीड टू सोशल गुड एंड टेक द कंट्री फॉरवर्ड. उसके बारे में. राइट, मैं खड़ा हुआ एंड जिस मैं यूएन के स्टेज पे हूँ, मैं बहुत प्रिपेयर कर रहा था, मैं ऐसे बोलूँगा, मैं वैसा बोलूँगा, और मैं सब भूल गया. मैं भूल गया, लाइक आई एम ब्लैंक. ठीक, और मैं खड़ा हुआ. ठीक है, तो मैं खड़ा हुआ, मैं एक आई थिंक 30 सेकेंड नथिंग. मतलब जय हिंद. दिस वाज माय लास्ट वर्ड ऑफ द स्पीच. मेरे को ऐसे एंड करना था. मैंने स्टार्ट किया जय हिंद. ठीक है, फिर सब देख रहे हैं, और फिर मैं बोलता हूँ दिस लेजिट हैपेंड. ओके, एंड आई एम सेइंग, देखो अब मैं हिंदी में बोलूँगा और मैं कुछ बोलूँगा जो तुम्हें समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम लोगों को लगेगा कि मैंने क्या बढ़िया प्रिपेयर करा है. तो एक काम करते हैं, कुछ ना कुछ मैं ऐसे बोलता हूँ, थोड़ा इंस्पायरिंग सा, थोड़ी टोन नीचे करता हूँ, एंड ये बोल रहा हूँ. ठीक है, और फिर मैं खुद ही ताली बजाने लग जाऊँगा ऐसे इमोशन में कि तुम लोगों को लगे कि हाँ यार, इंडिया के लिए ऐसा करना चाहिए. कुछ तो इंस्पायरिंग बोला. मैंने ऐसे ही बोला हिंदी में, एग्जैक्ट वर्ड यही बोल रहा था. There was one Indian guy there who was from the atomic research field. Gaurav was his name. He was I think he was an ambassador or something. And he clapped. Right? Because he... बहुत बकवास की है, मैं समझ रहा हूँ. तो उसने क्लैप कर लिया, बंदे का तोड़ते नहीं है. राइट, उसने ताली बजा दी. सब लोगों ने 190 लोग, सबने ताली बजा दी. Right? Everybody clapped. And then I recollected my thoughts and then started speaking something. Right? This happened. Okay. रिकॉर्डिंग है? नहीं यार, बस 15 सेकंड की क्लिप है पास. अच्छा, ओके. 15 सेकंड की क्लिप है वेयर आई एम टॉकिंग अबाउट कि एक बंदा है, उसको आई थिंक देयर इज अ गाय हु इज गेटिंग पुश्ड इन द सी. जस्ट दैट 15 उस टाइम पे ना रिकॉर्डिंग होती, कुछ होता था, यू डोंट नो, एंड यू वर नॉट अलाउड टू रिकॉर्ड दीस सेशंस. तो मैंने स्नैपचैट पे धीरे से बना दी थी फ्रेंड से. तो बस वही है. दिस हैपेंड एंड देन आई गेव माय स्पीच एंड देन अगेन आई एंडेड विद जय हिंद एंड आई टोल्ड देम कि ओके, दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड विद जय हिंद, बिकॉज़ आई वांटेड टू spread this word and spread this message of India around the world, right? And I want everybody to say Jai Hind with me. So सबने Jai Hind बोला, and because you get emotional, everybody stood up, clapped. I got out. I was like, oh, बच गए. Exam pass हो गई. Exam pass हो गई. Gaurav came to me. Who's the other Indian guy? The other Indian guy, okay, who was living in Vienna, and वो Vienna में atomic research के लिए कुछ कर रहा था इंडिया के लिए.
He was at like a crazy position. He used to report to Ban Ki-moon at that time. Wow. तो मतलब कुछ तो कर रहा था बड़ा काम. I didn't know what. I still don't know what he's doing. He came. He said, Raj, you know what? मुझे सब समझ आया तूने क्या किया. But बोलता that is a sign of a great speaker. Wow. That you can impromptu, you can make up something and still end up making people clap for you. Right? You should pursue this for your life. That's all he said. And I was like, मैं नहीं हूँ public speaker, मुझे आता नहीं है, सब करना नहीं है. He said, bro, तेरे को पता भी नहीं चलेगा तू कितनी आगे जाएगा अगर तूने इसको actually बना लिया तेरी strength. Because what you did there, लोग रो देते हैं 100 speeches देने के बाद भी जब उनको पता नहीं चलता है कि starting कैसे करो. And you did it. Wow. So that was like, oh, किसी ने reaffirm कर दिया that, okay, I was already in my awe that, okay, I'm getting clapped, like सबने मिलके तालियां बजाई. Second, I was in awe that I'm considered India now, that I'm representing a nation. Third, the guy reaffirmed who I feel is at some position. So already I'm getting it from the top. Validation. Correct. So then I was like, okay, this is what I want to do for rest of my life. And I started looking for more opportunities to speak. Started doing this. Then I was speaking around the world doing this. And then one time I went to Singapore. I was a speaker there, and Gary Vee was also a speaker there. Right? So I was I was a filler speaker, and Gary was a lead speaker. So मेरे 15 minute का slot होता है, but the good part is speaker line में नाम दोनों का होगा. So you can make a story that, okay bro, you and Gary spoke on the same stage, bro. So I was doing this cool thing. मैं अपने photo लेके खुश हूँ इसमें. And Gary said that you should document everything that you're doing. And I kept obviously asking him, ये content कैसे बनाते हैं, तुम तो बहुत बड़े बन गए, ये हो गया, वो गया. And he said, document, don't create. If you're always worried about creating content or what's going to be the next idea, what you're doing, you'll never be able to make content. Whatever you're reading, whatever you're doing, whatever you want to achieve in life, just document all that and put it out. Somebody will follow you. Right? कोई ना कोई तो देख लेगा. कोई ना कोई देख लेगा. Because there are thousands of people who are going through the same journey. He said it. And he said that everybody around the world will realize that content and media is the most powerful tool which people are missing on right now. And Gary, I used to look at him as like God, or he's done something, he's like an idol. So when he said, I took it seriously, I came back to India and COVID hit, and then I started creating content. Right? Now coming to my mom and dad. First time I told them, videos banane. Right? They were like, okay, banao. Good, we support you. फिर उन्होंने देखा कि वीडियोस तेरे रूम में उठता है, ऐसे बना देता है 3 things to know today, और फिर रख देता है, उठा हुआ है, बाल नहीं बने हुए हैं, अजीब नहाया हुआ नहीं है, कैसा दिख रहा है, क्या पेरेंट्स केयर अबाउट दिस अ लॉट. ये क्या कर रहा है, आंखें लाल है, सोया नहीं है, क्या कर रहा है, ये सब दाढ़ी वाड़ी नहीं बनाई है. दिस इज द कॉन्वर्सेशन गोइंग ऑन. आई एम लाइक, नो, ऐसे वीडियोस बनते हैं. अरे तो ढंग के तो दिखो. दिस इज द कॉन्वर्सेशन विद माय मॉम एंड डैड. ढंग से प्रेजेंट तो करो, कुछ क्या बोल रहे हो. एंड माई मॉम एंड डैड, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश. राइट? तो उन्हें ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती, तो मैं जो बोलता था उन्हें समझ नहीं आता था. उन्हें बस दिखता था कि यार दिख अच्छा नहीं रहा है, तो अच्छा बना दे. दिस वाज माई फीडबैक. ये हुआ. फिर मैं बनाते गया, नहीं सुनी, बनाते गया. ठीक है. फिर एक बार मैं अच्छा दिख के वीडियो बनाया, तो वहाँ ये करो यार, मज़ा आ गया, ऐसे ही करते जाओ, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है. सो दे वर ऑलवेज बीइंग सपोर्टिव. दे ऑलवेज थॉट इज अ साइड हॉबी. करता रह रहा है, अच्छा दिखेगा, अच्छा वीडियो बनाता है, चल रहा है, लोग देख रहे हैं, इसको मजे आ रहे हैं, इसको खुश होने दो. Thank God they were super supportive. Never questioned what I was doing. And then I said, मुझे बॉम्बे जाना है, मैं निकल रहा हूँ. ये कब? कोविड में था? कोविड में. ठीक है. This was January 3, 2021. I came to Mumbai. Okay. मेरे उस टाइम 200 के फॉलोअर्स हो गए थे. घर में 3 things करके. मैंने वो किया. मैंने घर वालों को बोला मुझे बॉम्बे जाना है, और अब मैं बिजनेस नहीं करूँगा, मैं कुछ भी और नहीं करूँगा. मैंने जो आज तक आपके साथ किया, बनाया, सब छोड़ के मैं अपनी नई दुनिया बनाने जा रहा हूँ, कि फ्रॉम ज़ीरो. नाउ दिस साउंड्स इजी राइट नाउ, बट एट दैट टाइम इट वाज लाइक यू हैव बिल्ट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच टू $multi-million एंड यू आर लीविंग दैट टू स्टार्ट समथिंग फ्रॉम ज़ीरो अगेन. In Bombay, in a new city. मेरे पूरे खानदान में से कोई इधर रहता भी नहीं है. I don't have any relative, nobody. So coming here, तो उस टाइम पे लड़ाई स्टार्ट हो गई. And then my mom and dad were not happy.
I was like, नहीं, छोड़ दो, ये क्या करना है, क्या करना है. And they try to do everything. First, on day one, they started with love. I was like, अरे ये क्या करना है, यहाँ से भी तो हो जाएगा. मैं नहीं, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टूडियो बड़े बनेंगे. हाँ, यहाँ बना लेंगे स्टूडियो. इंदौर में बड़ा बना देंगे. तुम्हारा रूम पूरा चेंज करवा देते हैं, ये करते हैं. पहले प्यार हुआ, फिर कोई ज़रूरत नहीं है. फिर हुआ, फिर थर्ड टाइम, देन इट बिकेम टू अ पॉइंट वेयर डैड स्टार्टेड चैलेंजिंग. क्या कितना कमा लेगा उसमें, छोड़ना, मैं देता हूँ अपने पैसे. राइट. एंड the battle is going from love to ego to now showing anger हो सकता है, तू कुछ नहीं है, क्या कर लो, क्या होता है, कितने लोग इतने आते हैं, ये करते हैं. And I didn't and at that time I was angry. I was like, क्या है, मतलब मेरी भी तो इमेज है, कुछ तो करने दो. And I'm always worrying about it. बहुत लड़ाई करी. लड़ाई करने के बाद I was like, ठीक है, मैं तो आ रहा हूँ. ठीक है. I came and I was like, okay, cool. क्योंकि उन्होंने मुझे इसलिए आने दिया क्योंकि मैंने एक बात बोली, which I should say this right now. Okay. I told them, यार मैं 1 साल जाता हूँ, मैं ना पूरा सेटअप बना लूंगा, और अगर सक्सेसफुल हुआ तो फिर सोचेंगे क्या करना है, नहीं तो वापस आ ही जाऊंगा और ज्वाइन कर लूंगा. 1 साल तो दे. तो घर वाले, हाँ ठीक है, 1 साल चले जाओ. हाँ. हम कॉलेज भेजते तुम्हें, इससे बेटर यहाँ चले जाओ, बढ़िया है. हाँ. अपनी मन की कर लो. ठीक है. एंड दे अग्रीड. इनफैक्ट आउट ऑफ लव माई डैड सेड कि बेटा कुछ खर्चा वर्चा भी हो, कोई टेंशन भी, तो उधर लेने की कोई जरूरत नहीं है, मुझसे ले लेना, नहीं भी कमाए तो 1 साल अपनी पूरी इच्छा पूरी करके आ जाओ. हाँ, आज तक वापस नहीं आया. So it happened with love, anger, everything. I came to Bombay with a lot of anger towards my parents, and which I was very wrong, because I thought कि यार ये लोग मेरी ambition को respect नहीं करते, समझ नहीं रहे हैं और रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये मुझे नीचा दिखा रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं. एंड आई वाज सो रॉन्ग कि घर वाले रेडी तो थे, बस वो इस चीज़ के लिए रेडी नहीं थे कि उनका बेटा दूर चले जाएगा. और वो प्रॉब्लम थी. और आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच आई ऑल्सो हैव टुडे एंड विच दे ऑल्सो हैव, एंड दैट इज अ सैक्रिफाइस दैट वी आर मेकिंग फॉर आवर करियर्स टुडे. क्योंकि इससे बड़ा स्ट्रगल कुछ नहीं हो सकता. पीपल सी दैट, ओ तुम्हारे पास बेस्ट लाइफ है, बेस्ट गाड़ियाँ हैं, बेस्ट घर है, तुम बेस्ट लोगों के साथ घूमते हो, तुम ऐसा काम करते हो जो तुम्हें बहुत पसंद है, तुम पैसे अच्छे कमा रहे हो, सब कर रहे हो, पर एट अ कॉस्ट दैट you're away from your family. I'm away from my family. और मुझे मेरे घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने को नहीं मिलता. मेरी मॉम दिन भर ये सोचती है कि यार मैं अपने बेटे से 1 घंटा बात कर लूँ. मेरे डैड दिन भर ये सोचते हैं कि यार कभी तो बात करा, अगर अपन बैठते हैं ना. क्योंकि मैं और मेरे डैड ना पहले बहुत बैठते थे, सुबह 4-4 बजे तक बात करते रहते थे रैंडमली, किसी भी बारे में. मॉम के साथ मैं बैठ जाता था, दिन में 2-2 घंटे बात कर लेते. अब वो होता ही नहीं है. So I think that is the cost that you pay. Of course, it's a huge sacrifice. And that is the biggest struggle, if you want to talk about, of career or of the content creation which I'm feeling. कि that तुम्हें अपने परिवार से दूर रह के कोई दूसरे शहर में अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कुछ किल करना पड़ता है. So now I feel like ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर मैं अपने मॉम डैड को सैक्रिफाइस करने में मजबूर कर रहा हूँ कि तुम अपने बेटे से दूर रहो, तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अब मैं इतना बड़ा बन जाऊंगा कि उन्हें उस बात का रिग्रेट नहीं होगा. उन्हें लगेगा कि हाँ सही किया. सो नाउ इट्स लाइक नंबर 1 इज नॉट अबाउट ओ आई वांट टू बी सक्सेसफुल. नंबर 1 इज अबाउट कि यार 2 साल दूर रहना, अभी तो प्रूफ करना है. अब प्रूफ करना है कि यार इसलिए दूर रहे, इसलिए ये बना है. सो दैट इज हाउ आई सी इट. बट ऐसे कोई मोमेंट वेयर यू बॉट समथिंग or you bought something for your parents कि मैंने आपके लिए खरीदा है? These are very special moments. Best moment बताता हूँ इसमें, ठीक है. Recently this happened. Not recently actually, चलो हो गया यार, मतलब 1 year ago, last year. ठीक है. पैसे बनाना स्टार्ट कर दिए थोड़े बहुत. Now what I did, मैंने एक नया बैंक अकाउंट खुलवाया. ठीक है. तो उस बैंक ने ऑब्वियसली वो बोलते हैं क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, 10 चीज़ें. तो आई वॉज वेरी एडमेंट अबाउट, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं करना. ठीक है. एंड आई स्टिल सेड कि उन्होंने बोला ये फीचर्स हैं, ये रिवॉर्ड्स हैं बैंक वालों ने. एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बैंक वालों की सरेंडरपिटी लेड मी एंड गेव मी द बिगेस्ट हैप्पीनेस ऑफ माई लाइफ. तो उसने बोला कि मेरी रिलेशनशिप मैनेजर ने, सर ले लो एक बार तो कर लो ये तो. हाँ ठीक है चलो भेज दो यार. ठीक है. तो उन्होंने भेज दिया मेरे परमानेंट एड्रेस पे, दैट वाज इंदौर. और मेरी मॉम ने ले लिया. और तब से लेके वो कार्ड मेरी मॉम के पास है. So, जब वो मेरी मॉम ने लिया ना, I felt like कि hey, you know what?
मम्मी आप रखो, आप रख लो, आज आपके तक लिए। आपने चुप चुप के मुझे पैसे दिए हैं ना, अब आपका टाइम है, ये लो कार्ड, इस पे आपको जितना खर्चा करना है ना उड़ाओ, जब जाना है जो करना है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। एंड आई टेल हर, पापा को भी बताने की जरूरत नहीं है, राइट? आप तो करो और उड़ाओ। बोलती नहीं यार, लेकिन तेरे को उधर करियर बनाना है, तेरे भी तो एक्सपेंसेस। अरे मम्मी सब आपके लिए तो कमा रहा है, राइट? सो दैट वाज द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि जब वो कार्ड मॉम के पास आया और मॉम ने फर्स्ट टाइम उसको यूज किया, शी वेंट टू आई थिंक लंच विथ हर फ्रेंड्स एट सम कैफे which usually she don't, and she paid with it. ठीक है, कर लेगा, सब हो गया। तो तब से and then now तो she has become an active shopper. It started मुझे आ रहा है। no, it started like कि चलो 6 महीने कुछ नहीं आते, 1-2 ट्रांजैक्शन हुए थे, लास्ट 6 months में अरे अभी मॉम दबाएगा, ये सब स्वाइप हो रहा है, हमसे कर रहे Balance, mom. I don't ask her. I never tell her to be balanced at all. I want her to be spoiled. Sweet. I want ki even if I'm begging on the road, I don't want her to feel that I have gotten this money out of begging. Like she should live like a queen, bro. मतलब मॉम को एकदम क्वीन लाइफ, जब जिस पे जो हाथ रखो वो कर लो। मैं रेंट कम भर दूंगा मैं एसी नहीं चला के बिल बचा लूंगा, मैं धीरे धीरे अपने पर काट लूंगा, बट मैं उधर नहीं करूंगा। So sweet. So that, but touch wood अभी तक ऐसी सिचुएशन नहीं आई, so ठीक है। That's how, that was the best moment of my life. So sweet. So tell me, who's been your favorite person to interview? उसके बारे में बताओ। I'll tell you 2 turning points. ठीक है, 2 लोगों ने जो कंटेंट शेप किया, बहुत चेंज किया। अपार्ट फ्रॉम माई डैड, जो दिन भर ट्रैक करते हैं मेरा कंटेंट आजकल, हर उनको पता है कि मेरे कितने वीडियोस मिलियन गए, कितने नहीं गए, क्यों गए, क्या गए, इसमें मैं क्या कर रहा था, लाइक ही जस्ट ट्रैक्स लाइक अ हॉक, ठीक है? सो ही जस्ट नोज एवरीथिंग, सो ही गिव्स मी लॉट ऑफ फीडबैक। माई गर्लफ्रेंड, शी गिव्स लाइक एवरीथिंग, मतलब बहुत सारा कंटेंट वही लिखती, वही बनाती, वही करती, लाइक शी इज वन, राइट? तो अपार्ट फ्रॉम माई फैमिली एंड माई गर्लफ्रेंड, माई फ्रेंड्स, उनके अलावा 2 people who their advices or maybe just one conversation just changed. Okay, one was Paritosh. So Paritosh Anand, he was my production head for a while, and he's still a friend now. He runs his company. तो वो सारे वीडियो शूट करता था स्टार्टिंग में, एंड हम 3 things बनाते थे। एंड उसने मुझे स्टेज पे स्पीच देते हुए देखा है, तो उसने मुझे बोला, भाई यार ये बहुत फोर्स्ड है, आप मुझे देख के बात करो और आप स्पीच दो जैसे आप बोर्ड पे खड़े हो, जैसे मुझे आप समझाते हो ना यूजुअली कि भाई तू ऐसा कर वैसा। बिकॉज आफ्टर द शूट और बिफोर द शूट आई वुड एक्सप्लेन हिम द सर्टेन थिंग्स अबाउट लाइफ एंड बिजनेस। जैसे आप बस ये करो, मैं एक क्लिप निकाल देता हूँ, ठीक है, वाइट बोर्ड वाली। तो ठीक है, मतलब कूल, आई वॉज इन माई एलिमेंट, एंड बिकॉज आई वॉज एक्सप्लेनिंग हिम एंड इट वेंट फॉर लाइक 30 minutes। उस 30 minutes में 3 रील्स निकली, एक 200K गई, दूसरी 200K गई, तीसरी 32 million। Wow. Because like it was my element and I was true to myself. Because I would just talk as if I'm aggressive, this and that, like मतलब मैं बात कर रहा हूँ लोगों से, and I kept doing that. So since that day, मैंने कैमरा पे नहीं देखा है। You're just talking. I'm talking to other people. So I always have somebody sitting right, just like you're talking. So we're recording right now. This is getting recorded. This will go as a reel or a clip in my pod. Wow. तो जिस पारितोष ने फोर्स किया और बोला कि यार कर दो ऐसे, क्योंकि वो नेचुरल एलिमेंट था, मैं और कंटेंट नहीं बना पा रहा था, और पारितोष ने ये, तो दैट चेंज्ड एवरीथिंग। सो यू नो दैट वन इनसाइट दैट हेल्प मी आउट। सो दैट वाज फर्स्ट चेंज, और फिर उसके बाद हम बहुत तेजी से ग्रो हुए। सो वी वेंट टिल लाइक 1 million followers, हाँ, 1 million something followers, राइट? एंड देन उसके बाद रिसेंटली थोड़ा टाइम पहले मिलियन क्या था, ग्रो नहीं कर रहा था, because I stopped. Universal problem of Instagram algorithm. तो मैं ग्रो नहीं कर रहा था, मिलियन क्या स्टक हो गया। Sorry, Meta. Please don't change our algorithm after this. नहीं, बड़े अच्छे लोग हैं, नहीं करेंगे, हमें तो प्रमोट कर रहे हैं। So मिलियन क्या 1.1 ही नहीं हो रहा, राइट? बढ़ ही नहीं रही, कुछ नहीं हो रहा। एंड ऑल्सो बिकॉज मेरा पूरा फोकस पॉडकास्ट पे चले गया था, आई स्टॉप्ड केयरिंग अबाउट नंबर्स। तो अंकुर वारिको ने एक बात बोली थी, अंकुर वारिको से मैं बात कर रहा था, अंकुर वारिको ने बोला कि यार राज, जब मैं तुझसे बात कर रहा हूँ, ही डिड अ पॉडकास्ट विद मी, तो मैं उनके शो पे गया था, एंड अंकुर ने बोला यार जब मैंने तुझसे बात करी, यार मुझे दूसरा राज दिखा। मतलब राज तो बहुत सॉफ्ट है, अच्छे से बात करता है,
he's a family man, he cares about relationships. मतलब वो इंसान है यार, नॉर्मल, he's fun. बट जब मैं राज का इंस्टाग्राम देखता हूँ तो वहाँ पे लग रहा है बस एक इंसान बहुत गुस्से में आ गया, रोज आके मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान दे रहा है, एंग्री यंग मैन, तुम चेंज नहीं करोगे तो दुनिया चेंज नहीं होगी, दुनिया चेंज नहीं होगी, ये होगा. तू तो बड़ा मस्त बंदा है. तो मैंने बोला हाँ. तो he's like फिर वो क्यों करता है? Like because वो भी मैं ही हूँ. That's but then he said कि यार ये साइड भी दिखा. लोगों को रियल साइड जानना है. just because कुछ चल गया doesn't mean कि लोगों को सिर्फ वही देखना है. लोगों को तू देखना है. वो भी इसलिए चला था क्योंकि वो तेरा पार्ट था. बट वो तेरी पूरी लाइफ नहीं थी. पूरी लाइफ वो मत बना. Right? Be soft. Talk about how you respect your relationship with your mother, with your father, with your girlfriend, with your friends. Talk about all these things. Show your vulnerability. Okay, let's talk about it. Yeah, let's talk about it. So he said that, and then I started creating. We'll talk about it. So he said that, and like बनाओ इसके बारे में content. तो मैंने बस बनाना start किया, and then we started growing again. After that. Again growing, and that's when the shift happened from just business to now relationships to like lot of other content. लेकिन ये cycles होते रहते हैं. हमारा भी we stopped at a certain point and now it's like okay, we're in the flow, we're back. So then let's talk about your girlfriend. Okay. So you can talk. I can talk about everything and anything. हाँ तो okay. मैं specific questions नहीं पूछूंगी. बताओ क्या बात करनी है. This is what you do, Raj. You have your own podcast. You should start talking. मैं क्यों पूछूं? I don't want to nudge. Okay. Blanket topic. Topical content. The topic. रे फंसा दिया. No, I'm cool. So I've dated one person for the longest time, and I'll tell you 2-3 qualities about her. Okay. One, she literally kicks me on the ass every day. like literally. She makes me accountable for the things that I keep saying loosely. And that I love the most. In the relationship or like on your podcast? For everything. For everything. For everything. If I say that, hey, you know what, I'll just talk to my mom every day, I have to not talk to my mom every day. If I don't, then she's like a review manager. She should talk to all men everywhere. Just do what you say. Really? यार, I tell you, लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? Please बता दो. मैं सारे लड़कों की. Not 3 things. Say 10 things. Okay. इतना हार्श मत हो यार, हम अच्छे लोग भी हैं, ऐसे मत करो. फिर बताओ लड़कों की प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम्स है. बस. बता, अरे 2 मेजर प्रॉब्लम्स. You reduce one big problem. अरे बता रहा हूँ 2 मेजर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है? 2 मेजर प्रॉब्लम्स. I'm also holding you accountable. 2 मेजर प्रॉब्लम्स है. एक है ना, हम कुछ भी बोलते रहते हैं और फिर फॉलो अप नहीं करते और उस पर खड़े ही नहीं रहते. we can just keep saying this around the world कि यार हम ambitious हैं, हम गोल पे फोकस कर रहे हैं, हम इस पे कर रहे हैं, उस पे कर रहे हैं. हम गोल्स भी 10 सेट करते हैं, अचीव 10 में से 2 ही करते हैं. मतलब बस बातें करा लो. सारे लड़कों की आदत है, क्योंकि हमको ना भागने की आदत होती है. लाइक वी जस्ट वांट टू बी, हाँ बोल, अरे चलो ठीक है बोल देते ना, गेट अवे. You know, we don't realize the power of words. We use it so loosely and it's so bad. But this is how we've been seeing around the world. हमारे आसपास पूरी दुनिया, हमारी सोसाइटी, हर जगह, क्योंकि वो ऐसे ही करता है कि सबने कुछ बोल दिया, हाँ ठीक है कर लेंगे, हाँ कर लेंगे. सारे लड़कों का एटीट्यूड यही होता है. तो वो अपनी मॉम से, अपनी गर्लफ्रेंड से, अपनी सिस्टर से, जितनी ऑल द लेडीज अराउंड हैं, उनसे वो कुछ भी बोल देते हैं कि उस सिचुएशन से बाहर निकल जाए बस. कि फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से I didn't take out time for my girlfriend, for example, right? हाँ ठीक है अगली बार कर दूंगा ना, पक्का डन निकल गया. अगली बार आया ही नहीं, right? अब बैंड बजती है. अब बैंड बजती है. तो बहुत सारे लड़कों की प्रॉब्लम है, और ये प्रोफेशनल गोल्स में ही प्रॉब्लम है, पर्सनल गोल्स में ही प्रॉब्लम है. प्रोफेशनली भी वो टीम के सामने है. That's why I believe that we need to learn a lot from women leaders because they hold accountable for everything they say. अगर उन्होंने टीम में कुछ बोला है ना, तो फिर वो होल्ड करती है अकाउंट. मेरी टीम मेंबर्स भी, अगर मेरी टीम मेंबर ने किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो वो she will die for that line, right? पर मैं बोल देता हूँ टीम में कुछ भी, अरे हाँ ये कर लेंगे, और फिर सॉरी भूल गया यार, अगली बार कर देंगे, क्योंकि मुझे उस सिचुएशन से बाहर निकलना है. एंड दैट्स अ बैड थिंग. दैट्स वन मेजर प्रॉब्लम. कुछ भी बोलते रहो, फॉलो अप मत करो. दैट इज वन. ठीक है. सेकेंड प्रॉब्लम है कि ना हम लोग फीलर्स नहीं होते. Feelers. So I tell you, this is primarily,
I don't want to actually make it super general, but I'll tell you the kind of guys I have met. Oh. Right? Disclaimer. The kind of guys I've met. I think masculine, feminine energy के बारे में बात करते हैं, right? So feminine energy is more feeling led. Masculine energy is more achievement led. Right? तो जब like from the beginning of the time, men are celebrated when they go and get something. वो बाहर जाके हंट करके लेके अचीव करके लेके आ गए, राइट? स्लोली पूरी सोसाइटी ऐसे बनी कि जहाँ पे तुम देख रहे हो बचपन से कि तुम्हारे फादर वो कुछ हर चीज उनके लिए ऑब्जेक्टिव लेड है. मोर देन प्रोवाइडर्स ऑब्जेक्टिव कि ये अचीव करना है, अब मुझे घर खरीदना है, अब मुझे गाड़ी लेनी है, अब मुझे मेरी वाइफ को वेकेशन पे लेके जाना है, अब मुझे ये करना है. सारा अचीवमेंट लेड है हर चीज. तो हम हर चीज को अचीवमेंट जैसे देखते हैं. Women are feeling led. They are like, okay, now we've gotten this. How do we make it better? How do we feel better? How do we make this relationship better? Right? तभी ऐसा होता है कि लड़कों के लिए चेज होता है जब तक वो रिलेशनशिप में नहीं आते. लड़कियों के लिए कहानी इसके बाद स्टार्ट होती है. लड़के यूजुअली, most women say this, that hey, you know what, he's changed. He's not the same as he was before he started dating. Before we started dating, he was very different. Because at that time, for him, it was just achievement and achieving that. It's not that he's not loving you. It's not that he doesn't want to be with you anymore. It's just that he doesn't know how to feel this and make it better. उसको कभी सिखाया ही नहीं किसी ने. So he doesn't know that. That is the problem. So I'll give you another example. Let's say house. लड़कों के लिए होता है घर खरीदना है. उनकी कहानी खत्म हो जाती है जब घर खरीद लेते हैं. लड़कियों की कहानी स्टार्ट होती है जब घर खरीद लेते हैं. Okay, now how do I make it home? How do I make it better? Okay, this needs to be this way. This needs to be energy. I need to feel good. I need to be better. Right? I think this is more feminine energy more than masculine energy. So ये problem है. So men need to understand how to feel better. That is the biggest problem which men have. Which is what I feel. What do you think? मुझे इस बारे में बिल्कुल बात नहीं करनी. क्यों? No. But do you agree? Are we like? I don't agree that there are only two problems. Okay. Everything else, yeah. So, but that's what I feel is a bigger. We'll chat. Yeah. We'll have a more productive. हाँ, वो 25 प्रॉब्लम्स निकाल दोगे. मैं तो 2 मेजर बता दिया यार. ऐसे नहीं, हम लोग इतने बुरे भी नहीं हैं. ऐसे मत करो. ऐसे भाई हम लोग बहुत अच्छे भी हैं. अच्छी बात बताऊं, मेरे पास 25 हैं. So now you are accountable in the relationship. Yes. Band अच्छी तरह बजती है? हाँ, बहुत दबा के. I have to be out there and then just be. Or how's love? Tell me about love and that side of your relationship. Yeah, I think, to me, I've never talked about love. Because I think it's just there. Like you don't have to give it a definition. You don't have to think about it. It's just, here's what I tell you, which my definition of being with a partner who's the right partner, according to me, okay? जिसके साथ तुम अगर बैठे हो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सही पार्टनर है. मतलब तुम्हारी रिलेशनशिप एक्टिविटी लेड नहीं है. तुमको उसके साथ सिर्फ बैठना भी अच्छा लगता है. नहीं कर रहे हम बात, हम दोनों सोच रहे हैं अपनी दुनिया में ही है. Can you do nothing with your partner? That is a good definition to decide whether their partner is right or no. You don't need to be doing anything. You need to be doing anything. Because it's very fun in games when you're doing something. Yeah. कि तुम एडवेंचर स्पोर्ट्स कर रहे हो, तुम साथ में जिम जा रहे हो, तुम साथ में सेलिब्रेट कर रहे हो, तुम साथ में काम कर रहे हो. बहुत ईजी है. Because you have something to do. Can you be with this one person in your room and just sit and do nothing? That is one very important thing. So can you do nothing and still be very much in love with that person? And be comfortable. And be super comfortable. Yeah. It's a good question. So that is one thing. The second question is कि जब तुम्हारा पार्टनर तुम्हें कुछ बोल रहा है तो तुम्हें वो हर्ट नहीं होता. अगर वो तुम्हें कुछ कमी निकाल रहा है, तुम्हें किसी चीज़ के लिए अकाउंटेबल रख रहा है, तो अगर वो तुम्हें हर्ट नहीं होता और तुम उसे प्रोडक्टिव लेते हो, तुम मोटिवेशन जैसे यूज़ करते हो, तो आई थिंक दैट्स अ राइट पार्टनर एंड आई थिंक दैट्स अ गुड रिलेशनशिप. बहुत सारे रिलेशनशिप में कैसा होता है दैट कि यार ये दिन भर बस मेरी कमियां निकालती रहती है या दिन भर कमियां निकालते रहता है, इसको मैं कभी आई एम नॉट इनफ फॉर दिस गाय, आई एम नॉट इनफ फॉर दिस गर्ल. दिन भर यू आर जस्ट थिंकिंग यार ये कैसे बोल दिया. ठीक है यार, बोल दिया इसलिए बोला ना क्योंकि तुम बेटर हो पाओ. सो इफ कोई अगर तुम्हें बार बार करेक्ट कर रहा है या वो चाहता है कि तुम थोड़े बेटर हो जाओ या तुम्हें वो बता रहा है कि यार तुमको ये करना चाहिए या ये करना चाहिए था
और तुम्हें उस बात को बुरा नहीं लगता, करना है नहीं करना है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग दैट यू कैन डिस्कस ऑन आइडियोलॉजीज एंड यू कैन फिगर आउट वन स्टेप, राइट? तुम लोग एक कॉमन ग्राउंड पे आ सकते हो साथ में कि यार हो सकता है हम दोनों अग्री नहीं करते तो कोई दूसरी चीज़ पे बात करते हैं, या दूसरी चीज़ इसको लेट्स जस्ट अग्री टू डिसअग्री, यू कैन डू ऑल ऑफ दैट. बट are you feeling bad about it? Are you feeling angry about it? Are you feeling hurt about it? If yes, then you should think about a relationship. Because if you're not, then it's a good relationship. It's a good relationship. Because no matter what my partner says, I'm like, हाँ यार, okay, सही है, तू सही बोल रही है. यहाँ गलत भी बोल रही है तो मैं बोलता हूँ. Stop the sentence. Okay. That is the advice. Yeah, I need more guys. We need more people on my side. But my point is, अगर गलत भी बोल रही है तो ठीक है, बात करते हैं. तू अपना पॉइंट बता, मैं मेरा पॉइंट बताता हूँ. बुरा मानने वाली बात नहीं है. So you're happy? Very. Wow. Good. Touch wood. Very. It's just obviously there are phases where you keep doubting yourself, where you keep doubting everything that you have. You doubt the partner, you doubt yourself, you doubt the conditions, situations, things. वो चलता रहेगा. That's a part of life. But are you happy in this or no? The answer is yes. So this is personally. We have to talk about professionally and House of X, which has exploded. You told me a few things, BTS, that I can't say right now, but wow, in advance. Thank you. Please tell us about House of X and how is the launch with the king and how has that been right now? And how proud are your parents? And how much more is auntie using the card? No, अभी तक House of X से whatever money is there, I'm not using it for any personal usage. I'm not giving it to mom, nobody has that access. I believe कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ना लोनलीनेस है, ठीक है? और जब तुम कंटेंट क्रिएटर बनते हो, तुम्हें कम्युनिटी बनाते हो, तो तुम लोनलीनेस किसी वे में कम करने की कोशिश करते हो, यू फील बिलोंग्ड, राइट? तो जब कोई कम्युनिटी है, जब सब लोग साथ में रह रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, यू आर इन देयर, लाइक यू फील कनेक्टेड, देन इफ यू गिव योर ओन फीलिंग in a shape of a product to your people, that's the best thing. Yeah. Right? Because you feel more connected with the product. Yeah. You feel more amazing about this thing because your values are aligned. I'll give you an example, right? You care about, let's say, looking good, reading a lot, right? Dressing a certain way, having intellectually good conversations, self-growth, right? These are like important things for you. Important values for you. If you put all of this in one brand, which you already done through Humans Bombay, but this way, like if you put all of these things in a brand and then give it to your community, right? So anyway, people who follow you align with your values, तभी तुम्हें follow करते हैं. Now they also have product from morning to night. Yeah. जहाँ पे वो हर चीज जिससे वो super connected है, वही feel कर रहे हैं. Yeah. So I think that's the best feeling. Of course. I want to use products which I'm more connected with. Yeah. I have started buying brands or started doing things which I'm connected with. So that was the idea, right? कि ये feeling led idea था, यहाँ से start हुआ कि कैसे मैं लोगों की feelings better करूँ, कैसे उनको more connected feel कराऊँ community से. I'll give you a great example of Red Bull. ठीक है? Red Bull energy drink नहीं है. Red Bull adventure की feeling है, right? That it's a taste. It's just an adventure. Yeah. ना अच्छी taste करती है, ना कुछ इनका ऐसा कोई crazy health benefit है, कुछ भी नहीं है. It's the feeling of adventure कि यार मुझे स्काई डाइविंग करनी है तो रेड बुल पी ही करूँगा, राइट? मुझे ऑल नाइटर पुल करना है ना क्योंकि कल सुबह मेरी एग्जाम है तो मैं रेड बुल पी ही करूँगा. एवरी एडवेंचर यू रिलेट टू दैट. I'm more connected towards that brand. There are thousands of energy drinks which are better tasting, but I still go to Red Bull because I love the connection with that brand. Yeah. Right? That is the feeling. That is the emotion they've tapped on. I feel every brand should be like that. And through content creators, you can make that easily. Because content creators are already tapped on the emotion and built a community. You just need to give that a shape and a form. Yeah. So that's what you can do. So that is how it started. Right? फिर उसके बाद how does it make sense from the professional world? ये तो तुम feelings की बातें कर सकते हो, दुनिया की बातें कर सकते हो, right? तो मैं एक sensible बात बताता हूँ कि तुम्हें कभी भी अगर country की growth करनी है तो तुम्हें हर किसी का spending power बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? कंजम्पशन पावर बढ़ाना पड़ेगा. तो कोई भी कंज्यूम क्यों करता है प्रोडक्ट्स? अगर उनकी लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन होगा, राइट?
वैल्यू एडिशन कैसे होता है? जब तुम उन्हें कोई एक नई ब्रांड देते हो जो तुम पहले कभी यूज़ नहीं करते थे. फॉर एग्जाम्पल कि पहले एक साबुन होता था जिससे ऊपर से नीचे तक लोग नहा लेते थे, राइट? फिर कोई एक प्रोडक्ट आया, बोला कि यार नहीं, साबुन तुम्हारे सर के लिए अच्छा नहीं है तो शैम्पू यूज़ करो. एडिशन, वैल्यू एडिशन इन कस्टमर्स लाइफ. नाउ आई यूज शैम्पू, ब्रिलियंट. फिर शैम्पू के बोला यार इसके शैम्पू ज़्यादा यूज़ करने से तो बाल रफ हो जाते हैं तो कंडीशनर यूज़ करो. दैट्स अनदर एडिशन. तो जब भी कस्टमर की लाइफ में एक वैल्यू एडिशन होता है वो ब्रांड के थ्रू होता है और तब उसका कंजम्पशन पावर बढ़ता है. और क्योंकि वो ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है इसकी वजह से कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ हो रही है, बिकॉज कंट्री में ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है, कंट्री स्पेंड ज़्यादा कर रही है. दिस इज हाउ इट ग्रोज. The purchasing power goes up. Your purchasing power goes up. Right? Now, India broadly is divided India 1, India 2, India 3. Right? India 1 uses 10,000 products in their life क्योंकि वो 1000 चीज़ें यूज़ करते हैं. India 2 uses like 500 to 1000 products. India 3 uses 50 to 200 products. Okay? This is based out of Kishore Bayani's book and that's what I'm quoting on. Okay. So ये 3 India. What's the book? It happened in India. ठीक है, तो तीनों का segregation है. You will grow when India 2 and 3 reaches a point of 10,000. Yeah. That is more products in circulation. Exactly, more products in circulation. वो बहुत difficult होता है. अब obviously जो 2000 प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, 1000 प्रोडक्ट यूज़ करता है, वो पहुँच नहीं सकता इतनी आगे. बट नाउ योर क्वेश्चन इज 500 प्रोडक्ट से क्या उनको तुम 1000 यूज़ करवा सकते हो? 1000 प्रोडक्ट से कैन यू मेक देम यूज़ 2000, 3000? सो यू नीड टू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ. हाउ विल यू ऐड वैल्यू इन देयर लाइफ? ठीक है, बाय अवेयरनेस, बाय मेकिंग देम फील मोर कनेक्टेड, by giving them what they want. Do they want more solutions? Do they want aspiration? Do they want some, whatever they want, you give them that. Right? तो तुम ऐसे करके ऐड करते हो. I feel through content and content creator, it's easiest to create awareness and tap on those markets where people have not started using multiple products. So you can do that. That's the big opportunity for me. And India too is growing. Right? And this is how it works. India too wants to become like India 1, India 1 wants to become like Western countries want to become like again India 3, right? You know, it's the circle और सबको किसी और के साथ बनना है. So India 2 will start spending और ऐसा होगा. Now one can argue, लोग बोलते हैं ऐसा कि भाई India 2 spending power नहीं है, India 3 spending power नहीं है. तो GDP देखते हैं. 20 साल पहले 500 बिलियन थी. 20 years ago, $500 billion GDP. Right? Today it's around 3.6 trillion. Right? तो बढ़ रहा है. कंट्री का फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर इनकम इज 16%. सो 3.6 ट्रिलियन का 16% इज इंडिया 2 एंड इंडिया 3 बेयर मिनिमम. दूसरे बहुत सारे सेक्टर्स में भी है, बट आई एम सेइंग वो तो हो गया. तो जो पहले 500 बिलियन पूरे देश का था, लगभग 500 बिलियन इज इंडिया 2 एंड इंडिया 3. नाउ दे हैव मनी, दे जस्ट डोंट नो वेयर टू स्पेंड. So you need to give them reason to spend, and that's where everybody is tapping on. Just like Apple. Now Apple has $1 billion revenue in India. It's unreal. Right? It's crazy. Apple in 2016 didn't have $1 billion revenue, right? They were trying to get factories here, but नहीं था, लेकिन उन्होंने वाला नहीं करना. Right? अब वो आ रहे हैं, अब टिम कुक खुद आ रहा है, right? क्योंकि उसको पता है. Exactly, वो खुद आ रहा है, खुद स्टोर खोला है, क्योंकि उसको पता है कि भाई बॉम्बे वालों ने ले लिया, अब मेरा मार्केट पूरा बाकी इंडिया है. So power is going up, people are coming here. I feel we need to reach there faster and tap on this opportunity to add value in people's life so that they don't end up buying products which they're not connected with. Amazing. And that's House of X. That's House of X. And that's what we're trying to do. And in one line, how was the King experience? How were your numbers? You want to tell numbers? I don't want to talk numbers. बात कर लेते हैं. I don't want to. Okay. Because I think it's too soon to celebrate numbers. Correct. I'll just say that in 4 days, we sold 10,000 pieces just like that. All organic. We launched it 4 days. And nothing. We just said that we are here. Got sold out. After stopping cash on delivery, giving a waiting list of 45 days, not using any promotion, not even putting stories, nothing. We just went, like literally we shadowed ourselves. We still got 4,000 orders. Wow. So that is the testimony. Speed. Yeah, that is what we are going on. So these are the numbers I'm talking. The launch video which we launched without King, just with King's team and our team together, we just King thought, ही नहीं है. King ही नहीं है. We just thought of something. एक creative सोचा, वो करा. That is 356,000 shares, 4.2 million views. Nobody shared it. Organic travel.
Unreal. So that is, we had like 500,000 visitors in a week on the website. So that is what is going on, and this is just the beginning. Yeah, this is new India. This is new India. This is starting. Yeah. I'll tell you a funny anecdote with King. Okay, first time जब King और मैं बैठे थे, मैं भाई ब्रांड बनानी साथ में करते हैं, ठीक है? तो मैं उसको बता रहा हूँ, देख ये डेटा है, you know, ये परफ्यूम बिकॉज वी वर लॉन्चिंग, तो देख परफ्यूम की कैटेगरी इतनी बड़ी है, ऐसे करके यहाँ पे ग्रो हो रहा है, अमेजोन पे इतना बिकता है, नायका पे इतना बिकता है, ये वाली ब्रांड्स इतना कर रही है, एंड मैंने आधे घंटे का उसको एक एक नंबर बता दिया. किंग बोलता है, भाई ये सब तू देख, अपन को ये देखना है कि मेरी जो वाइब है ना, जो फीलिंग है ना, वो कैसे अपन दूसरों को दें. That's it. Yeah. And that's where we started actually, you know, reverse engineering ki bro, this is the most important thing. We have to get his vibe right. We have to get the vibe right. We have to give his feeling right, Yeah. right? King says, I feel king. His content is, I feel king. Yeah. He wants everybody who's following him or who listens to his music to feel like king. To feel like the queen of the world, the king of the world, that they just get that feeling out, that confidence he wants to put out. Yeah. उसको वो करना है. तो हमने बोला यार ये करते हैं. तो फिर उसके बाद हमने बैक टेस्ट स्टार्ट करे, ठीक है? टेस्ट हमने किया कि जहाँ पे हमें परफ्यूम ली, एक हाथ पे लगाई और इस हाथ दूसरे हाथ पे लगाई, 2 परफ्यूम थे, डॉन एंड डस्क, 25-30 लोगों को भेज दिया, वो पूरे दिन लगा, बताया नहीं कौन सी राइट. सबको बोला कि हमें बताओ कौन सी बेटर है, राइट? बट 25 people came with different. ये अच्छी, ठीक है, डन. तो एक टेस्ट हो गया कि दोनों परफ्यूम्स अच्छी है. भाई मतलब ऐसा नहीं है कि कोई किसी को सबको बेकार लग रही है, ठीक है. फिर देन 100 लोगों पे हमने ना परफ्यूम डाल दिया और बोला नहीं कि तुम किससे पूछो मत अच्छी है कि नहीं है, बस पहनो, राइट. अगर तुमको लोगों ने नोटिस नहीं किया, मतलब फ्लॉप परफ्यूम है. 24 hours दिए, जो गए, out of 100, 80 people came back. Yeah, people asking what is the perfume. No, that's amazing. That's real, right? Yeah, that's so it's like, oh, notice भी हो रही है, मतलब feeling right है, king की feeling है, get noticed. Yeah. तो वो सही हो रहा है. Third is, उसके बाद personal test, ठीक है? Personal test, okay, I'll tell you extreme test we went through. Perfume लगाई खुद पे, जब पूरे स्वेट कर रहे हैं तब कैसी स्मेल आ रही है, विदाउट स्वेट कैसी स्मेल आ रही है, जिम जाने से पहले कैसी स्मेल आ रही है, जिम जाने के बाद कैसी स्मेल आ रही है, अगर वो किसी दूसरी चीज के साथ मिक्स होती है तो कैसी स्मेल आ रही है. आई डिड द ग्रोसेस्ट थिंग इन माई लाइफ, बट आई स्टूड इन द सन वेयरिंग जस्ट लाइक अ वेरी थिन टी शर्ट, स्वेटेड आउट, रैन, एंड फिर मैंने परफ्यूम लगाया. क्या मेरे स्वेट की परफ्यूम के साथ वो परफ्यूम कैसी मिक्स होके आती है, बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. And then इतने searches के, इतने research और इतने सारे experiments के बाद we came down to 2 final perfumes and then we launched, and I think, and that's why you sold. Yeah, that's why. Now the real test is how many people reorder. They'll reorder. Of course. I'm sure they'll reorder. I'm confident. I'm confident. Amazing. Congratulations. Thank you so much. So now we're going to go into the next segment, things about you we can't find on Google. Okay. Wow. Short, snappy answers of just these very interesting questions that we've thought of. ठीक है. Okay. Done. So Google पे probably won't find it, but नहीं. YouTube, Instagram मिल जाएगी. देख लेंगे. A skill of yours nobody knows about. ये कितना difficult question है यार. तो brain exercise, jogging. That I can get free business class upgrades by just talking out at the reception. That is a skill which I'm like super proud. Yeah. I can never do it. And I say this because I've gotten at least like 7 or 8 business upgrades till now, all for free. So we should do a 3 The things. class, okay, no, I just talk to the cabin crew and try to convince them by I'm just charming. That's a powerful That's a skill. powerful one. What's your favorite book apart from yours? That's a... Not your book. What's your favorite book? I really like Naval Ravikant's Almanac of Naval Ravikant. I really like that. Your guilty pleasure? My guilt, Pani Puri, of course. Like, that's just... I actually knew that. Don't have like any other guilty pleasure. That's one thing I can eat like all day. Yeah. Your favorite holiday destination? Keeps changing. I don't go to one place. Like I'd never go to the same place again. Achha. Okay. So right now, in my dreams, I want to go to Brazil. Maybe that's my favorite destination. If you could solve one problem in the world, what would it be? One problem? In the world, you could solve. What would it be? India's branding. I really feel that Yeah. India is
best country in the world, but the way Western people perceive us is bad. Yeah. It's just, I think, वो थोड़ा change कर दो ना, kill कर देंगे. हम तो वैसे हैं kill. It's just we just need to communicate right things. A quote that has helped you through difficult times. Quote? Yeah. It's still day one. By Jeff Bezos. Yeah. Wow. It's still day one. Yeah. Okay. Next segment is 3 things. HOB edition. Okay. You have to be very quick about this. I'm going to ask you 3 things. Okay. Let's go. Okay. 3 things on your bucket list. Going to Brazil. Buying a sports car. Wow. Giving my mom a dream house. Okay. 3 things you would never do. I would not lie to my audience. I would never promote something which is wrong, I know, and I'm getting paid for. Unintentionally ho jaye pata nahi, but intentionally I'll never do that. And I would never hurt my parents. Or at least try to. That boat has sailed when you left the house. Okay. 3 lessons you've learned from your girlfriend. Always follow up on what you say. Okay. Sometimes it's okay to not have an objective while talking to someone. You can have conversations without objectives. That is second. Number 3 is you have to comfort the other person before you actually get down to the meaty conversation. Okay. 3 things new couples should do in their relationship. Wow. Party a lot together. Like get drunk, go crazy because तुम्हें सब पता चल जाएगा. All shades. all shades because you have to stand in long lines. You have to stand you'll go through like a lot of things. That is one. Second is lock yourself in the room for one day and don't do anything. Figure out how you can do that. That's really stressful. Number 3, write down 10 values that you really don't want to discount in your life. Like, and see if it aligns. Just talk to your partner about it. That is very important. Yeah. 3 things an aspiring entrepreneur should do. Learn how to sell. Learn how to keep learning. And learn how to listen. Good. Very good advice. 3 things you're most grateful for. I'll tell you 3 lessons I'm grateful for. My mom taught me one. Instead of always thinking about or reading self-help books, think about how you can help others. Self-help ki jagah help others pe shift kar do. That is one thing I'm really grateful for. My mom taught me. My brother taught me it's always day one. You're not too big, you're not too small. You've come somewhere, but you have to go far. So be always ambitious. My dad taught me that you can't treat every human being based on just their skills and achievements. You need to treat other human being as a human being. Yeah. So 3 things I'm grateful for from my mother, brother and father. Amazing. 3 mistakes you don't regret. Leaving house and coming to Bombay. That I don't regret, clearly. Losing 45 lakhs on sales on Amazon during COVID. Yeah. In tax. Really? Yeah. Oh my God. I made a stupid mistake. Instead of choosing a slab of 18% tax, I chose 40%. Luxury goods. Oh, shit. 5% or 40%, yeah. Oh shit. So I had to choose essential goods 5% and I chose 40%. And this cost me 45 lakhs. Oh my God. I don't regret that because that taught me how to be attentive to details. Yeah. How to be attentive to details. That is second. Third, firing someone who I thought was an integral part of my team at a very early stage. I don't regret that. I think it's good. That person is amazing and they actually know how to build your company and they're really good. But I think now that guy is more successful because I saw that entrepreneurship thing in him and he could be better with doing his own stuff rather than working with me. Amazing. So that is one mistake. I used to regret that a lot.
Yeah. Like But for now the you longest don't. time. Because he's really good. I haven't found a replacement even today. Hmm. Like he's so good. But thank God I fired him because now he's doing way better in his life. My loss, but his gain. Amazing. Okay, last question. So you were a kid who wrote about Forbes at the back of your notebook. Yes. Then you came in Forbes 30 under 30. Big deal. Of course, all of your other achievements you just can't discount, but this was like a manifestation cycle. What advice would you give to somebody who's dreaming and is ambitious but is feeling stuck in their life? You know, very basic advice I want to give. Okay? Be the loudest person in the room who's talking about your own dreams. Like you should just shout out about your dreams. Tell everyone, write it everywhere, tell everybody. And you will realize that at every stage, there is some or the other person who will come and help you to achieve that dream. Because most of the times you're like, oh, if I say this and I won't be able to achieve it, what will the world think? What will I be able to do? And then you think like, oh, I don't want to tell this to anyone because, you know, what will people think about it? I can't be sharing. I'll achieve it and then share it. All of that. I think that is wrong. The only thing is, if you're stuck, share it with someone. You're not stuck. You're on your path. You really feel that you're growing fast. Share it with someone. You'll grow faster. You are not growing at all. You're declining. Share it with someone. Somebody will help. Wow. So just talk about your dreams out loud everywhere. Put it on social media. Tell it to people. Meet friends. Talk to random strangers and do it. I spoke to somebody in a train, and that guy ended up becoming my sales head. No, that's crazy. Right? Yeah. So this is how it happens. Yeah. So just keep telling your dreams to Putting it people. out there. Putting it out there. Just talk about your dreams day in and day out. और नहीं भी achieve कर पाए तो ठीक है ना, क्या दिक्कत है? बोल रहा था 10 बातें बोलते हैं. Thank you so much for doing this. This could have gone on for a couple more Forever, hours. yeah. Now we have another one. Yeah, we'll do it. another one. We'll do after the name you told me. Okay. So thank you so much, and I'm wishing you so much luck for everything that you're building, and it's gonna happen. You already know that. Thank you so much. Thank you for coming to our office. Thank you so much for having me here. I'll see you on my podcast now. Yeah, we'll figure it out. Yeah, we'll figure it out. Let's go. If you like this episode, don't forget to subscribe to our channel and hit that bell icon. Thank you all for being the best community, and I'll see you soon. The only issue was that since childhood I was a stammerer. So I used to stammer a lot. So I think that was one hindrance in my life which was stopping me for doing a lot of things.